Himanshu sir, please kindly give the co-host to Mithali ma'am. Mithali ma'am is already joined. Himanshu sir, hello. Hello Mithali ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. Okay ma'am. Are you I hope ready? I'm audible. I'm audible, ma'am. You are audible ma'am. You are Okay. audible. Thank you so much. Sound is such, everything is all right. So we'll wait for 1 or 2 minutes or we'll start. We can start. Yes, ma'am, as you wish. Okay, 1 or 2 minutes will be just wait so that the participants can be. Okay, she will join. Good afternoon, everyone. As usual, after Chat Puja and Deepavali, we are once again meeting each other for a wonderful session with one of the best trainer. That's none other than Mithali Mukherjee, Principal, Millennium World School, Patna. Welcome, ma'am. And your topic is managing stress to optimize inner potentials. Last, we have already discussed about the stress management and all. Now, the managing stress to optimize inner potential. Very well connected topic. And I'm sure that we are going to enjoy. We have to learn a lot from ma'am because she's from my side, I can tell you that I'm one of the best teacher too. I learned from her teaching style too. Welcome, ma'am, in this for this training. And before starting the training, it's a request for all the participants. Please don't send your request for the attendance link on time. It will be sent, and you have to write. You have to write the email ID through which your name has been registered, and your name has to be written in bold letters, capital letters. Kindly don't forget to don't write yes, no. In that case, you may not get the certificates. You need to write your name in capital letters. Thank you, ma'am. Welcome on behalf of the Aryavarta Sahodaya and on behalf of the participants. We welcome you and Himanshu sir, training coordinators, taking pain so that we can all complete our target of the training well in advance. Thank you, Himanshu sir, and my mentor and who made Aryavarta Sahodaya. I thank to Dr. C.B. Singh sir too for this. Over to Mithali. Thank you, ma'am. Thank you, Aryavat Sahodaya, for giving me this opportunity.
And today we are going to discuss a very burning topic, that is stress. So basically, before we start the topic, we should try to understand what is stress and whether having stress is good or bad. Most of us feel that stress is something very negative and we should stay away from stress, we should not have stress, etc., etc. But then today, I'm going to disclose you certain facts about stress, which will make you feel that stress is not only a villain, sometimes it's a hero also of your life. So, a certain amount of stress, the kind of stress that you have, all that we are going to share today, so that you understand. First, you have to analyze what kind of stress you are having. And then, if you feel that the stress is not good for me, then you should learn how to do away with it. Because if you are in bad stress all the time, then you know what happens? Whatever you can achieve in life or whatever you can get in life, whatever potentials you have within yourself, they somehow get suppressed. So, all about stress, I think anything you want to know about stress, today we are going to come up with some good answers about it. And after the session, also, if you have doubts left in your mind, please feel very, very free to come back with your questions. So please permit me to share my screen first. Let me see. Okay. So I hope my screen is visible to all of you. Okay, fine. Now I would like to go for the slideshow view so that it is better visible to you. I hope this is good enough. I'll close the screen also. Yeah. Is it okay now? So we are going to discuss today, as ma'am very rightly said, managing stress to optimize inner potentials. Now, you look at this figure. This figure is I love this figure and it speaks about itself, You don't have to explain this figure. You can see there's a man who is throwing away stress from his head. So what are we all the time trying to do? We are trying to get rid of stress. We all have this common feeling. I think everyone who is attending the session has this common feeling, common little knowledge that stress is not good for us. And therefore, we always try to push it away from us. But do you realize, dear friends, that in the process of pushing away stress, we are taking more and more stress. So how to get rid of stress, that has become a more stressful affair for us. So first, let us try to understand that what is stress and do we really need to push away all the stress that we have? Is it actually so important? Or we should try to manage stress. Therefore, I've used the word managing the stress. Throwing away stress is not important. Managing the stress is important. Like, for example, give a simple example. Every person has some amount of body weight. Now, somebody is 30 kg, somebody is 20, somebody is 50, somebody is 100, somebody is 100 plus. So what do we actually try to do? Suppose we are on the higher side of body weight, we try to throw away some weight. But suppose you are a person who thinks कि भाई मेरा तो body weight होना ही नहीं चाहिए, एकदम मुझे weightless होना है मुझे. Possible है. आप कितनी भी कोशिश करो वो possible ही नहीं है. क्योंकि जब तक आप हैं आपके बॉडी में कुछ ना कुछ वेट रहेगा. जैसे आपको याद होगा बीच में एक बहुत अच्छी या बुरी, आई डोंट नो, बट एक बात चली थी that we want to have zero figure. Certain heroine has a zero figure. Now zero figure became our imagination. Zero figure became our choice, became our dream. तो जीरो फिगर पाने के चक्कर में हम लोगों ने क्या किया, और ज्यादा स्ट्रेस पाल लिया. हम बहुत मोटे हैं तो हमें कोई स्ट्रेस नहीं है, लेकिन एक बार हम दुबले होने का अगर हम स्ट्रेस ले लें, वो स्ट्रेस ज्यादा होता है. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इफ यू हैव स्ट्रेस, दैट इज बेटर देन you trying all the time very hard to throw away that stress from yourself. That is even more dangerous. So don't ever think that one day I will be stress free. No, that day never will come in your life.
As long as we are alive, that day cannot come in our life. Nobody's life that I'm absolutely stress free. But then that day can certainly come in your life. I'm very sure that day can very easily come in your life, that you learn how to manage the stress. You learn how to play with it. मैं बहुत मोटी हूँ, लेकिन मैं कैसे कपड़े पहनती हूँ, मैं कैसे अपने आप को कैरी करती हूँ कि मैं बहुत मोटे होने के बावजूद भी बहुत अच्छी लगूं, ये मैं आपको समझाने की कोशिश आज करूंगी। मैं कहीं भी आपको ये नहीं कहूंगी कि अगर आपके अंदर जरा सा भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, आप अपना 0 स्ट्रेस लेवल पे चले जाओ, ये नहीं पॉसिबल है। लेकिन स्ट्रेस होते हुए भी हम कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं, हम कैसे उसका आउटलेट दे सकते हैं, हम कैसे हैप्पी रह सकते हैं, हम कैसे खुश हो सकते हैं, हम कैसे अपने पोटेंशियल्स को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन टुडेज सेशन। So please remember, don't try to throw away stress. Try to manage your stress. Okay. So ये थोड़े से simple words हैं जिनके मतलब और जिनके difference को आपको समझना चाहिए. So today we are going to discuss this topic, managing stress to optimize inner potentials. And as we all know that everybody's potentials are very different. And you know, there's a sea of potential within us. And वो sea इतना गहरा होता है, इतना deep होता है, इतना ब्रॉड होता है कि हमें पता ही नहीं कि हमारे अंदर के पोटेंशियल्स हैं क्या। और एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कोट, बहुत खूबसूरत सी कोटेशन है जो मुझे भी याद आ रही है, that if you cannot handle stress, you cannot handle success. You know, you have to understand कि जैसे जैसे आप जीवन के लैडर्स में ऊपर चढ़ते हैं, you have to be a wonderful stress manager. And the day you learn how to manage your stress, how to play with your stress, that is the day, you know, you actually become a successful person in life. So, if you ask me personally, I would always say that I'm not against stress. I'm against wrong methods of handling stress. I think that should be our punchline for the day. So, first of all, let's try to understand what is stress. What is stress? Now, stress can be defined as our mental, physical, emotional, and behavioral reaction to any perceived demand and threat. जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बहुत खुश हूँ, मैं एक रिसोर्स पर्सन हूँ, मैं आर्यवर्त सहोदया के लिए सेशन ले रही हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। और अचानक ये सेशन लेते लेते क्या होता है, भगवान ना करे, लेकिन अचानक मैम ये सेशन लेते लेते मेरे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, मैं वही हूँ, मेरा ओहदा वही है, आई एम स्टिल द रिसोर्स पर्सन, I'm still taking a session with learned people like you. But suppose there's a small problem in my laptop and I'm not able to play my PPT, or I'm not able to connect through WebEx. What will happen? The same resource person, the same stage is there for me, the same platform I'm in, but I will be in stress. Why I'll be in stress? Because I'm not able to handle that damage which has occurred in my laptop. Are you understanding? So stress hota kya hai? Stress is nothing, but stress is our behavior, whether our mental behavior or our physical behavior or our emotional behavior to anything which is happening around us. Now suppose Shah Rukh Khan comes to my room. I'm in the principal's cabin right now and Shah Rukh Khan comes into my room. But instead of talking to me, Shah Rukh Khan starts addressing someone else. Another teacher in my room is very pretty, was very beautiful. Shah Rukh Khan gives entire attention to that teacher. But Shah Rukh Khan is actually sitting in my cabin, suppose my principal's cabin. अब मैं स्ट्रेस में आ गई कि यार शाहरुख खान आया तो, लेकिन मुझसे क्यों नहीं बात कर रहा, मुझसे क्यों नहीं बात कर रहा है। सिचुएशन बहुत खूबसूरत है। आप देखिए, मेरे रूम में, मेरे प्रिंसिपल्स केबिन में शाहरुख खान has come. A very happy moment for me. But I'm in stress because he's not talking to me. But you think about the other teacher, जो दूसरी टीचर मेरे रूम में बैठी हैं, और अगर शाहरुख खान उनसे बात कर रहा है तो क्या वो स्ट्रेस में है? वो तो बहुत हैप्पी होंगी. She'll be very, very, very happy. So the situation is the same. The conditions are the same. लेकिन वो एक इंसान के लिए स्ट्रेसफुल है और दूसरे इंसान के लिए हैप्पी मोमेंट हो सकता है. So what is stress? Stress अपने आप में कुछ नहीं होता. Stress is our reaction to a situation. तो अगर आप अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर लोगे, आपको स्ट्रेस होगा ही नहीं. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? स्ट्रेस कोई सामान नहीं है, स्ट्रेस कोई चीज नहीं है. स्ट्रेस वो मेंटल कंडीशन है जो आपको किसी सिचुएशन की वजह से होती है. तो सिचुएशन
is not the stress. Situation के according आपका reaction is the stress. और जैसे मैं ये word कहती हूँ ना reaction, ये reaction word ही actually गलत है. This reaction word, you should try to remove the word reaction from your dictionary, from your life, from your mind, from your soul, from your body. Remove the word reaction. हम कैसे कहते हैं, मान लीजिए मुझे बहुत खुजली हो रही है यहाँ, तो मैं कैसे कहती हूँ, लगता है कुछ रिएक्ट कर गया, कोई रिएक्शन हो गया, दवाई का रिएक्शन हो गया, पूरे चेहरे पे लाल लाल मार्क्स आ गए. रिएक्शन वर्ड ना पॉजिटिवली नहीं यूज होता है. प्लीज रिमेंबर दिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड. हम जब भी मीन करते हैं कि मुझे किसी चीज से रिएक्शन हुआ, आई एक्चुअली मीन कि वो चीज ने मेरे बॉडी पर या मेरे चेहरे पर या मेरे दिमाग पर कुछ नेगेटिव असर डाला है. आई अंडरस्टैंडिंग. लेकिन ये पॉजिटिव कैसे हो सकता है? हाउ कैन रिएक्शन बिकम पॉजिटिव? The reaction will become positive the moment you change the word. Instead of reaction, you should say response. आप कभी कहते हैं क्या, मैंने एक दवाई खाई, देखा ना उसके रिस्पॉन्स में मेरे बॉडी में ये लाल 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 चिकते हो गए? हम नहीं कहते हैं, हम कहते हैं रिएक्शन. तो ये वर्ड रिएक्शन ही नेगेटिव है. ट्राई टू अवॉइड इट इन योर लाइफ. आप हमेशा ये सोचो कि मैंने रिस्पॉन्ड किया. आपको किसी ने डांटा, आपको आज प्रिंसिपल मैम ने या प्रिंसिपल सर ने अपने रूम में बुलाया एंड प्रिंसिपल टेल यू आर नॉट वर्किंग वेल, यू आर डूइंग दिस, यू आर डूइंग दैट. नाउ व्हाट हैपेंस? आप रिएक्ट करते हो, सर मैम हाउ कैन यू से दिस, आई वर्क फॉर दिस मेनी आवर्स इन अ डे, आई एम अ वेरी हार्ड वर्कर, आई डू माय वर्क, ऐसे वैसे. लेकिन अगर आप प्रिंसिपल रूम से बाहर निकल जाएं और अब 10 मिनट टहल ले कहीं भी, या पानी पी ले जाकर, या अपना लंच खा ले थोड़ा सा अच्छा वाला जो आपने आज बनाया है सुबह सुबह फॉर योर स्कूल, और उसके बाद प्रिंसिपल से आकर मिले और कहे मैम या सर व्हाटएवर, मुझे समझ में नहीं आया आपने क्यों कहा, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन एक्चुअली व्हाट आई हैव डन. डू यू थिंक that the principal's reaction I'm saying will be the same as it was previously? So you see what I have written there, I've written 3 alphabets there. What is the meaning of these 3 alphabets? If you have attended my previous sessions also, you must be knowing. I've written SAR. What is the meaning of this? S means stimulus. A means action. And R means response. So कोई भी stimulus आपको आती है. Stimulus means, you understand, science teachers, you must be understanding response to stimuli आपने पढ़ा है. So अगर आपके पास कोई भी stimulus आए, मान लीजिए किसी ने आपको एक थप्पड़ मार दिया, ये एक stimulus है, आप क्या कर सकते हैं? आपके पास 2 ऑप्शन है. आप पलट के उसको एक थप्पड़ मार दीजिए, ये एक्शन. Every action has an equal and opposite reaction, as we say in physics. तो एक्शन हुआ, आपको किसी ने थप्पड़ मारा, आपने पलट कर एक थप्पड़ मार दिया. What will be the result? Do you think the result will be something very sweet? Will the other person give you a candy? लीजिए मैडम, लीजिए सर, आपने मुझे थप्पड़ मारा इसलिए आप कैंडी खाइए. This will never happen. अगर आप उसे एक थप्पड़ मारेंगे, पलट कर हो सकता है 2 मारे, आप फिर 4 मारना, वो 6 मारेगा, 8 मारोगे, फिर हाथापाई करोगे, फिर पुलिस थाने हो जाएगी. So अगर आप स्टिमुलस पे तुरंत एक्शन देते हैं, it creates stress. लेकिन अगर स्टिमुलस और आपके रिस्पॉन्स के बीच में थोड़ा समय देते हैं आप, तुरंत you don't take an action, give some time, stop and give some time, then you know the reaction actually becomes a response. And this response is a stress buster. हम कहते हैं ना मेरा स्ट्रेस बस्टर है, मैं अपने डॉगी के साथ कुछ टाइम स्पेंड करती हूँ, मेरा सारा स्ट्रेस चला जाता है. माय डॉग इज माय स्ट्रेस बस्टर. तो आपको डॉग की जरूरत नहीं है, आपको स्लीप की जरूरत नहीं है, आपको म्यूजिक की जरूरत नहीं है, आपको सोने की जरूरत नहीं है, आपको शॉपिंग करने की जरूरत नहीं है. द बिगेस्ट स्ट्रेस बस्टर इज टाइम एंड विच इज फ्रीली अवेलेबल टू ऑल ऑफ अस. हो सकता है आपके पास कुत्ता नहीं है, आप अपना स्ट्रेस कैसे बस्ट करोगे? आपके पास शॉपिंग करने के लिए पैसे नहीं, आपका स्ट्रेस कैसे जाएगा? आपके पास सोने के लिए जगह नहीं, आपका स्ट्रेस कैसे जाएगा? कैसे जाएगा स्ट्रेस? अगर आप थोड़ा सा समय देंगे तो. ऑलवेज रिमेंबर दैट एनीथिंग हैपेंस टू यू, you don't need to react, and reaction means immediate. सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट किया, तुरंत कुछ बन गया, आपका एक बम से आवाज हो गई, रिएक्शन हुआ. तो don't react, don't be a bomb in your life, don't explode all the time. कुछ भी हुआ हो, try to digest it for some time, and then उसके बाद जो आप बोलोगे या आप करोगे या आप दिखाओगे, वो रिएक्शन नहीं होगा, वो क्या होगा? रिस्पॉन्स होगा. तो सबसे पहले if you want to improve, you actually want to do good, you want to bring out your inner potentials, learn to respond
rather than react. This is your first lesson for the day, that we all learn to respond rather than react. And you know what we think, actually हम लोग क्या सोचते हैं ना, if we react, we think, अरे जवाब दे दिया उसको, बराबर का जवाब दे दिया, हिसाब बराबर कर लिया. लेकिन actually what are you doing? You are increasing your stress, your stress, your stress. So कोई भी इंसान, कोई भी सिचुएशन लाइफ में आपको स्ट्रेस नहीं दे सकता है. आप खुद अपने आप को स्ट्रेस देते हैं रिएक्ट करके. कुछ भी हो जाए मेरे आसपास, मैं नहीं रिएक्ट करूंगी, मुझे स्ट्रेस नहीं होगा. So remember, nobody in this world gives you stress. If you say, I have work stress, I have exam stress, I have family stress, I have financial stress, all this is rubbish. There is no work stress. There is no financial stress. There is no family stress. You are your stress. You are your stress. If you decide today that I will not react to anything, I will only respond after giving some time to myself, after thinking a little, nothing will happen. Nothing will happen. You will never feel bad. You will never feel levied with a lot of stress. So you understand this? What is stress? Stress is our mental, physical, emotional or behavioral reaction. देखिए word reaction use किया गया है. Response नहीं. और हम क्यों react करते हैं? Why do we react? Because we think that this situation is very demanding or threatening for me. अगर मैं इस वक्त नहीं बोली, इस वक्त मैं नहीं react की, तो यार मुझे और कुछ खराब हो जाएगा. So you invite your stress. Okay. Now, this alarming fact all of you should know, because all of you are working people, that 77% of people experience stress-related issues in their physical health. And 73% of people experience stress related to mental health. 77% stress is physical, due to physical health, and 73% is due to mental health. But in our country, it's a taboo to talk about mental health. आप खुद टीचर्स हैं, आपने खुद एक्सपीरियंस किया, हो सकता है कोई प्रिंसिपल भी हो या हो सकता है कोई काउंसलर भी हो या, you know, I have experienced in my life that whenever I call a parent and try to explain that parent that, dear parent, your child needs a little bit of counseling. Dear parent, your child is experiencing some mental health issues. You know, the parent is ready to beat me. मारने को, काटने को तैयार हो जाता है. वही कहता है कि मैडम आपको मेरा बच्चा पागल लगता है. But mental health is not पागलपन. Mental health बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपकी बॉडी को फीवर आता है, आप थर्मामीटर पे चेक करते हो, वैसे ही मेंटल हेल्थ है. सेम थिंग. आपको फीवर आती है, पैरासिटामोल लेते हो. आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज, आप उसकी दवाइयां लेती हैं, उसकी काउंसलिंग करती हैं, माइंड को रेस्ट देते हैं. But nobody wants to talk about it. That is why, you know, a study shows that the cases of dementia, the cases have increased so much in our country now. Mental health has become a real challenge for people around, because still we don't want to talk about it. So when we say about health, please don't think about physical only, it's about mental health also. Okay, next is that the research says that one of the major causes of stress among adults is work related. पहले तो हमारे पास नौकरी नहीं होती है, फिर जब हमें नौकरी मिल जाती है तो हम ये कहते हैं यार यार इस नौकरी में बड़ा स्ट्रेस है, स्ट्रेसफुल जॉब है मेरा. वी आर नेवर हैप्पी. तो आप कैसे अपने जॉब को स्ट्रेसफुल बनाते हैं, कैसे आप अपने डिमांड्स को मीट करते हैं, दैट एक्चुअली मेक्स योर जॉब स्ट्रेसफुल और योर सराउंडिंग स्ट्रेसफुल. सो यू आर द रीजन, नॉट योर जॉब. अगर आप ये थोड़ा सा चेंज अपने थॉट प्रोसेस में लाते हैं, इफ यू जस्ट रिवर्ट द फिंगर्स and point fingers towards yourself instead of pointing fingers at someone else or your job, please point the finger towards yourself and say, I am the reason of the stress around, my job is not. Very soon you will get positive results. Okay, what makes something stressful? I'm not talking about job only. Why do we feel stressed? What makes something stressful? Anything. मान लीजिए आपको डिनर पे जाना है अपने हस्बैंड के साथ कहीं, बहुत लोग उस पर भी स्ट्रेस हो जाते हैं. मैं कौन सी साड़ी पहनूं, मैं कौन से कपड़े पहनूं, मैं कैसे सजूं कि मैं सुंदर लगूं. तो दिन भर इंसान स्ट्रेस में है कि आज शाम को मुझे डिनर पे जाना है, आई मस्ट लुक वेरी ब्यूटीफुल. यार आप उतने ही ब्यूटीफुल लगोगे ना जितने आप हो. आप वही कपड़े पहनोगे ना जो आपके पास है. व्हाई डू यू टेक दैट स्ट्रेस? So, beautiful end product can also be the cause of a stress. Going for dinner with your husband is a beautiful end product.
उसको भी आप स्ट्रेसफुल बना सकते हैं। कैसे? अपने बिहेवियर से, अपने इमोशन से आप बनाते हो। सो यू आर द रीजन ऑफ द स्ट्रेस, यू आर द सेंटर ऑफ ऑल स्ट्रेस अराउंड यू। प्लीज डोंट फॉरगेट दिस। सो व्हाट मेक्स समथिंग स्ट्रेसफुल? सिचुएशंस दैट हैव स्ट्रॉन्ग डिमांड्स। शादी के दिन मुझे बहुत सुंदर लगना है। Everybody wants to look like, Aishwarya Rai or Priyanka Kapoor or whatever it is, whatever. I don't know why. Why can't you look like Mithali Mukherjee? Why can't you look like yourself? Situations that are imminent. Imminent means you cannot do away with. You have to face that situation. Now, मान लीजिए आप किसी के घर गए, उसके घर किसी की मौत हो गई। अब आपको लग रहा मैं क्या बोलूं जाकर, मैं क्या बोलूं, मैं कैसे मीट करूं, मैं कैसे बात करूं? Causes stress. Life transitions. Life transition means suppose you change a job, suppose you change your city. You remember the first gray hair that you notice? मुझे भी याद है, मैंने जब अपना पहला सफेद बाल देखा था, I was not very happy. I felt now there's a transition. I was young. I am moving towards, you understand, I hope. So these kind of transitions, something great happens in the family, great in the negative sense, I'm saying. There's a death of a major, a person without whom you cannot imagine your life. So these transitions of life also cause stress. Timing. अब मैं रोज सुबह 7 बजे उठती हूँ, अचानक मैंने कोई ऐसी नौकरी पकड़ ली जिसमें मुझे सुबह रोज 4 बजे उठना पड़ रहा है। स्ट्रेस होगा। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, बहुत दिन आपको स्ट्रेस रहेगा। पता नहीं मैं उठ पाऊंगी या नहीं, पता नहीं अलार्म सुनाई देगा या नहीं, पता नहीं अलार्म बजेगा या नहीं, पता नहीं समय पे पहुंच पाऊंगी या नहीं। आपको स्ट्रेस होगा। एम्बिग्विटी, व्हेन यू डोंट नो। आपने एग्जाम दिया नीट का, आपके बच्चे ने IIT का एग्जाम दिया है, आपने BPSC का एग्जाम दिया, आपको पता नहीं क्या रिजल्ट होने वाला है। एम्बिग्विटी, व्हेन यू डोंट नो थिंग्स। Desirability, a very, very important cause of stress, my dear friends. Desires. 32 इंच का टीवी है, 34 इंच का चाहिए, 34 इंच का है तो 50 इंच का चाहिए। मेरे पास 4 सीटर गाड़ी है, मेरे पास 7 सीटर गाड़ी चाहिए, मेरे पास फ्लैट है तो मुझे घर चाहिए। So your desires cause stress. Controllability, very important. When you cannot control certain things, you want to control something but you cannot control, that causes stress. So ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे ना तो हमारे दिमाग से जुड़ा हुआ है। Situations which are strong demands, situations which are imminent, life transitions, timing, ambiguity, desirability, controllability, ये सारी चीजें हमारी ego system से जुड़ी हुई हैं, हमारे दिमाग से जुड़ी हुई हैं। But the moment you start thinking in a different way, in a positive way, I don't think you will have any reason to be under stress. Okay. Now, when you have a stress, my dear friend, there are two options with you: the fight option or the flight response. Fight or flight, run away. और तो कुछ होगा ही नहीं लाइफ में ना। मैं बहुत बदसूरत दिख रही हूँ आज, मुझे डिनर पे जाना है हस्बैंड के साथ, लेकिन मैं बहुत बदसूरत दिख रही हूँ, क्या करूं? इधर आने से यार तुम्हारी बीवी ऐसी है, ले जाना हो तो ले जाओ, नहीं तो छोड़ दो, या मैं भाग जाऊंगी, मैं आज नहीं जा सकती, मुझे बहुत हाई फीवर है, प्लीज टुडे आई कैन नॉट गो, आई रन अवे फ्रॉम द सिचुएशन। सो दो ही पॉसिबिलिटी है माय डियर फ्रेंड्स, इतना स्ट्रेस क्यों लेना? ईदर यू फाइट और यू फ्लाइट। सो व्हेन द सिचुएशन इज थ्रेटनिंग, what our body decides it. Actually, आप खुद देखोगे बहुत सारे सिचुएशंस आपकी लाइफ में ऐसी आती हैं जब आप ये सोचते हो, नो लेट मी डू इट, लेट मी ट्राई, करते हैं ना, जो होगा देखा जाएगा। और बहुत सारी सिचुएशंस हमारी लाइफ में ऐसी आती हैं जब हम ये सोचते हैं, यार मुझे नहीं करना, प्लीज आई डोंट वांट टू डू इट, नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, प्लीज आई डोंट वांट टू डू। किसी के साथ आपका झगड़ा हो गया, फिर आपको चलो 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 हम लोग दोस्ती कर लेते हैं। समटाइम्स यू फील हाँ चलो ना दोस्ती कर लेते हैं। कभी कभी आपके मन में फीलिंग आती है, नहीं मुझे उस इंसान से बात ही नहीं करना लाइफ लॉन्ग, मुझे नहीं मिलना उससे। व्हाट इज दिस फ्लाइट? So actually, your body, it's a physiological change. Your body tells you, fight करना है कि flight करना है. Listen to your body. Listen to your mind. Please. दो ही response possible है, तीसरा कुछ है नहीं, ठीक है? Next, stress response. कोई भी stress में, you have to follow the response pattern, not the reaction pattern. For example, if you find exams stressful, this is for your students as well. Talk to your children about stress. That's very important. It's not that only you have stress. Even your kids have stress. Even a newborn baby has stress. उसे समझ में नहीं आता कब उसे भूख लगी है, तभी तो भूख लगता है, तो रोने क्यों लगता है बच्चा? आपने कभी सोचा? एक बच्चा जो
जिसको भूख लगती है वो रोता क्यों है? आप रोते हैं कि आपको भूख लगती है? तो आप कहते हैं ना मम्मा मुझे खाना दो, या आप अपनी वाइफ से कहते हैं मुझे खाना दे दो, या आप जाकर दुकान में खा लेते हैं। लेकिन एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है, उसे भूख लगती है वो रोता है, उसे नींद आती है वो रोता है। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए स्ट्रेस है, उसे नहीं पता हाउ टू रिस्पॉन्ड। उसके बॉडी में कुछ चेंजेस हो रही है, हो सकता है उसके पेट में दर्द हो रहा होगा, हंगर क्रैम्प्स हो रहे होंगे, उसे नहीं पता हाउ टू हैंडल इट, सो इट स्टार्ट्स क्राइंग और शी स्टार्ट्स क्राइंग। यू अंडरस्टैंड दिस? सो एक नए जन्मते बच्चे को भी स्ट्रेस होता है। So don't say that I am living in a life without stress. That is not possible. So please remember, suppose I'm just giving an example. Exams हैं, आपको stress हो रहा है, तो क्या होगा? आप में physical response कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है? Can anyone write in the chat box please that अगर मेरे exams आने वाले हैं, कल से मेरे exams हैं, कोई physical response आप बता सकते हैं due to stress? Anybody? You can write in the chat box. आपके बॉडी में क्या चेंज हो सकता है जस्ट एग्जाम के पहले अगर आप स्ट्रेस में हैं तो? कि भैया कल से मेरे एग्जाम्स हैं, ये फटीग। वेरी गुड प्रिया जी, फटीग। एनीथिंग एल्स which is very common? Anyone? Heart rate increase. Very good. Heart rate increase. Very good. Sometimes we face issues like lose motion. पसीना आने लगता है हमें बहुत ज्यादा. We start sweating a lot. So these are physical responses of stress. Behavioral response. What can be? Heavy breathing. Very good. Washroom use. Very good. Less salivation. Okay. Now tell me one thing. Behavioral response क्या हो सकता है? Suppose I'm in stress. कल से मेरा एग्जाम है. मेरे behavior में क्या change हो सकता है? Stomach ache. Very good. Anyone who can please suggest me some behavioral responses of stress? Irritation. Very good. Sadness. Very good. Cranky. Very good. Very good. You know, my son, I'll tell you about my son. Whenever he's in stress, what he'll do is he'll start shouting at others. Angry. Very good. This is what? Aggressive. These are behavioral responses. Mental response. Anyone who can give me some mental response? Behavior and mental is different. You know, behavior is actually when you do something, and mental is something is happening in your brain. Aggression could be mental. आपके दिमाग में aggression हो रहा है, कुछ दिमाग में खुजली जैसी हो रही है, आप हो सकता है आप react नहीं कर पा रहे, आप show नहीं कर पा रहे. Somebody gave a very beautiful example. Overthinking. Yes, nail biting is a physical response. You're biting your nail. That's a physical response. Why are they showing my battery is low? Just a minute. I hope it's okay now. Okay. Then emotional response. Anyone? Can you tell me, give me an example of emotional response? You are in stress. Emotions में आपके क्या change हो सकते हैं? Emotional response, anyone? Very good. Crying, sadness. So you see, all these are mixed. So अगर आप stress में, तो ये सारी physical, behavioral, mental, emotional, mood swings, ये सारी चीजें आपके साथ हो सकती हैं. Okay. So avoid, alter, accept, and adapt. This is only what I can suggest. Now, you know why I was telling you so many times, not all stress is bad. Not all stress is bad. Now, there are two kinds of stress. Actually, stress can be classified into two types. Number one is distress. Distressed. मतलब आपको नाम से ही पता चला होगा. Distressed. When experience of feeling oppressed, behind responsibilities, difficulties, there's no light at the end of the tunnel. That is called distress. Like financial difficulties हैं आपको, आपके घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, कोई बहुत लंबे समय तक बीमार है, आप खुद ही अगर बीमार हैं, ट्रॉमा हुआ है किसी टाइप का, कोई शॉक लगा है आपको, that is known as distress. जो आपको दुखी करता है. And there is another beautiful stress which is known as eustress. What is eustress? Stress which makes us happy, positive, it's beneficial for us. We feel challenged. अब आपने मुझे कह दिया मैम आपसे तो ये होगा ही नहीं, चैलेंज फील कर रहे हैं, होगा कैसे नहीं, चलो मैं करके दिखाती हूँ. And I start doing my studies, start doing my research and do something good. मैं stress में थी, but that stress was a positive stress because at the end of the tunnel there is light.
आप इमेजिन करिए, आप लोग में जब से जितने लोग शादीशुदा लोग हैं, आप इमेजिन करिए शादी के एक दिन पहले आपको कैसा फील हो रहा था? बाप रे, पता नहीं किससे शादी होगी, कैसे होगी, अच्छा होगा नहीं होगा, अच्छी होगी नहीं होगी, खाना बनाकर खिलाएगा या नहीं, खूबसूरत होगी या नहीं, so many things. But at the end of the day, you are happy that tomorrow you're getting married. You are happy, isn't it? So at the end of the tunnel, if there is light, that is known as eustress. And at the end of the tunnel, if there is no light, it is known as distress. So please, please, please find out eustress in your life. Love that stress. Stay cling to that stress. That is not bad. Actually, eustress helps you bring out the inner potentials within you. आपके अंदर जो inner potentials हैं उनको बाहर लाने में eustress helps you. Eustress motivates you. Eustress pushes you. So the more you stay with eustress, it is good for you. Okay. So that is the reason I always say this: all stress is not bad, and you cannot stay without stress. Now, why do we stress out? The first reason is we perceive a situation as dangerous, difficult, and painful. अभी क्या हुआ? आपको एग्जाम्स आ रहे हैं, आपके बच्चे के दिमाग में रहेगा वहां पर एग्जाम आ रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा. Yes, sometime dangerous also. So अगर आपको ऐसा फील होता है कि you are caught in a situation, the result of which is not good, you are under stress. And the next is you feel stressed when you believe I cannot do it. And even if I want, I cannot do it because I don't have the resources around me. मुझे लिखना है, मेरे पास पेन नहीं है. So you feel stressed. Are you getting my point? So basically यही होता है. तो अगर आप डरना छोड़ दो, अगर आप ये सोचो कि कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है, मुझे वो काम करना है. मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई बीमारी है और मुझे इंजेक्शन डॉक्टर ने लिखा है, तो इंजेक्शन लगेगी तो पेनफुल तो होगा ही, लेकिन हमें क्या सोचना है? हमें रिएक्शन नहीं देना, हमें रिस्पॉन्ड करना है. हमें ये सोचना है कि भैया क्या हो गया, इंजेक्शन लगेगा तो मैं ठीक हो जाऊंगी, ये जो दर्द मुझे हो रहा है वो नहीं होगा. आप अगर ऐसे सोचोगे तो इंजेक्शन आपको स्ट्रेस नहीं देगा. नहीं तो आपने देखा होगा ना, कितने बड़े लोग भी होते हैं, एडल्ट्स भी होते हैं, who are so afraid of taking injections. उनको लगता है बाप रे, cannot, because they are not able to see beyond that pain. So learn to see beyond danger, beyond difficulty, beyond pain in order to experience the eustress. Okay. Now, let us try to understand a little bit of work stress, because we all are working people. Can you see this person poor? I cannot even see his face. Only help, help, I'm in stress, help me. So अगर आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा हो गया है, तो I'm giving you certain reasons to rejoice and feel relieved from stress. So work stress सबसे पहले होता क्यों है? आपको वर्क स्ट्रेस होती है जॉब इनसिक्योरिटी की वजह से. कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे निकाल दिया जाएगा, वर्क लोड की वजह से, इसलिए क्योंकि आप ट्रेंड नहीं, आपके पास रिसोर्सेज नहीं, लैक ऑफ कंट्रोल ओवर द वर्क एक्टिविटीज, आपके मैनेजमेंट स्टाइल से आपको होती हो, आपके वर्किंग आवर्स से होती है, सुबह से रात. टेक्नोलॉजी बहुत लोगों को स्ट्रेस देता है बिकॉज दे आर नॉट गुड इन टेक्नोलॉजी, दे आर नॉट टेक्निकली savvy, so that could be a reason for the stress. Change of organization could be a reason of stress. Challenges in the work, यार रोज मुझे 5 ऐसा काम दे देते हैं जिसके लिए मुझे बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत रिसर्च करना पड़ता है. ओके. Next is conflict with manager or colleagues. Yes, work conflict is a major reason of stress. Sometimes we have our personal problems also. My husband doesn't want me to do a job, still I'm doing a job. So every day there's a conflict at home which I carry to my workplace. Bullying or harassment. Work-life balance. जैसे आज ही मुझे शाम हो गई, मैं 1 घंटा लेट घर पहुंचूंगी, 2 घंटा लेट घर पहुंचूंगी, तो घर के जो काम है, टाइम टेबल थोड़ा डिस्टर्ब हुआ तो मैं कैसे बैलेंस करूंगी? दैट इज अप टू मी. रैंडम इंटरप्शंस. अब मैं आपका सेशन ले रही हूँ, 10 बार लोग मेरे कमरे में आएंगे, मैम ऐसे कैसे होगा, मैम वो कैसे होगा, मैम ये कैसे होगा, तो I may feel irritated and stressed. No feedback, good or bad. कोई मुझे बोलता ही नहीं है मैंने अच्छा काम किया कि बुरा काम किया, मैं कर रही हूँ. There's no motivation. Worrying about events that have not happened. अभी मेरे स्कूल में एनुअल फंक्शन नहीं हुआ, एनुअल स्पोर्ट्स नहीं हुआ, start worrying about it. कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा, कैसे करूंगी, कम समय है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा. You got my point? No appreciation. Too many things at the same time. My table is overloaded. जैसे मैंने आपको पिक में दिखाया ना, that person was hidden under paper. So much of work to do. Poor communication, lack of support, and poor working relationships.
these could be the possible cases, causes of stress at workplace. Although I don't claim that this list is exhaustive. Okay. Now, how can you understand why, whether you are actually having work-related stress or not? How will you understand? कि भैया मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मुझे मैं स्ट्रेस में हूँ या नहीं. तो अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स है तो हो सकता है आप वर्क स्ट्रेस में हो. देखिए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टेलिंग अबाउट दीज सिम्टम्स. मेरा इंटरेस्ट ये है, आई जस्ट वांट टू टेल यू दिस, अगर आप कंटिन्यूअसली स्ट्रेस में हैं, प्लीज get rid of it. Continuously, if you are under stress, you please understand this, that your lifespan is decreasing. You are actually making your life very unhealthy and very bad for yourself and your loved ones. So that is the reason I've given you this list. If you feel that your body is also showing some of the symptoms, you please, it's time for you, it's an alarm for you, it's a red flag for you, that get rid of that stress. And how to get rid of the stress? You can only get rid of yourself. As I told you, don't point finger on anybody. Point that finger on yourself. Because stress क्या है? वो आपका reaction है. The moment आप reaction को response में बदल देंगे, आपका stress खत्म हो जाएगा. So please remember this. If you're having mood swings, low energy, headache, upset stomach, rapid heartbeat, insomnia, which means lack of sleep, frequent cold and infection, high blood pressure, depression, short attention span, loss of appetite, भूख ही नहीं लगती ऑफिस में, दिन भर कुछ नहीं खाते, that means you are in job work stress. So it's time you peep inside your life, you put more energy and focus on your life and think, why am I having all this stress? And I've written a beautiful quotation here, peace begins with a smile. So please smile. Half of your stress will be relieved. Okay. Next is solutions for managing stress. अब इतना तो मैंने आपको स्ट्रेस के बारे में बता दिया. अब आप कहेंगे, मैम स्ट्रेस को भगाऊं कैसे? इतना इजी नहीं है कि फिंगर को अपनी तरफ पॉइंट कर लूं. There are certain tips and tricks to get rid of stress. ठीक है. ज्यादा से ज्यादा मेरा पहला और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक जो मैंने आपको बताया वो यही है कि आपके स्टिमुलस और आपके एक्शन के बीच में टाइम होना चाहिए, so that the reaction gets converted into a response. Then, well, you have 24 hours in a day. Friends, try to stop 4 or 5 times in life. Don't run. You know what is happening today? Everybody's running. I don't know for what. For money, of course, for profits, for a lot of name, for a lot of fame, and that is a cause of stress. Please understand that in our life, in our day-to-day, we need to stop. Stop means when anything happens, give time to yourself to think and then respond. That's very important. Stop को आप याद रखें कि मुझे दिन में 3-4 बार stop करना है. तुरंत मुझे जवाब नहीं देना है, मुझे काम नहीं करना है, मुझे बोलना नहीं है. I have to think whatever happened and then come up with a beautiful response, with a positive response. That is the best way to dampen stress in your life. Okay. Now, some of the techniques are, please talk to someone. Please talk to someone. अगर आपके आप स्ट्रेस में है ना, फॉर एग्जाम्पल आपके हाथ में दर्द होगा, जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, वेरी सिंपल एग्जाम्पल. ओके, आई होल्ड दिस कप. नाउ दिस इज स्मॉल कप. वी ऑल होल्ड कप्स. आप लोग सब चाय कॉफी कुछ भी पीते होंगे, दूध पीते होंगे, आप कप में पीते हैं, आप इसको होल्ड करते हैं ना. अगर मैं इस कप को 10 सेकेंड होल्ड करके रखूं, नो स्ट्रेस. 20 सेकेंड होल्ड करके रखूं तो थोड़ा सा मुझे फील होगा कि माई हैंड इज अ लिटिल बिट ऑफ पेन. अगर मैं इस कप को 1 मिनट होल्ड करके रखूं ऐसे ही या ऐसे, like when we take a pledge, I will feel that pain. I'll feel my muscle is becoming stiff. अगर मैं इस कप को 5 मिनट होल्ड करके रखूं, मुझे और ज्यादा स्ट्रेस फील होगा, मेरे मसल में और ज्यादा क्रैम्प्स होंगे. यही है स्ट्रेस. ये पूरी कहानी है स्ट्रेस की. स्ट्रेस तो रहेगा ही. मैंने ये कप क्यों होल्ड किया? कि मुझे बढ़िया कॉफी पीनी है. दिस इज यू स्ट्रेस. ये स्ट्रेस है, कप को होल्ड करना पड़ रहा है, तभी मुझे कॉफी मिलेगी, बढ़िया वाली कॉफी. यू स्ट्रेस. लेकिन अंदर कितनी भी बढ़िया कॉफी क्यों ना हो, अगर मैं इस कप को 10 मिनट तक ऐसे ही पकड़े रहूं तो मेरे हाथ में दर्द होगा. डैमेज विल हैपन टू माय बॉडी, टू माय माइंड, एंड देन द यू स्ट्रेस बिकम्स डिस्ट्रेस. डोंट होल्ड द स्ट्रेस.
ये पूरी जो स्ट्रेस की कहानी है ना, वो यही है कि हमें स्ट्रेस को होल्ड करके नहीं रखना, उसको रिलीज कर देना है। झगड़ा हुआ हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ आपका झगड़ा हुआ, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, लेकिन तुरंत कोशिश कीजिए पैचअप कर लें, तुरंत कोशिश कीजिए एक दूसरे को सॉरी बोल दें, तुरंत कोशिश कीजिए मैनेज कर लें। उस झगड़े को होल्ड करके नहीं रखना है। some of us do that, no, for days, for weeks we don't talk to each other. So what are you doing? You're holding the stress. And जब आपके अंदर वो स्ट्रेस रहेगा, then what will it do? याद रखिए, stress is just like a, just like a bad insect. जब तक वो आपके अंदर रहेगा, it will keep on biting. And when it will bite, it will damage some part of your mind or some part of your body. So just throw it away as soon as possible. Okay. Next is ask your boss if you're doing okay. आपको मोटिवेशन नहीं मिल रही है ना, आपको रिसोर्सेज नहीं मिल रहा, आपको ये नहीं पता चला आप अच्छा कर रहे हो बुरा, go and ask, sir, ma'am, are you happy with my work? Do I need to improve? Delegate at home also. सास बहू वाली लड़ाई नहीं करनी है। आप प्लीज मत समझिए that you are the best in this world. You are not, my dear friends. You are not. आज अगर मुझे कुछ हो जाता, मैं इस दुनिया से चली जाऊं, तो कल क्या ये स्कूल नहीं चलेगा, मेरा घर नहीं चलेगा? चलेगा। मेरे बच्चे बड़े होंगे, मेरा पति जिंदा रहेगा। So learn to delegate. Don't think you are the best. Please give work, assign work to other people. They are also very good. They just need maybe a little bit of guidance. They can do even better than you maybe. Next is cut down on caffeine and sweets. बहुत ज्यादा मीठा, बहुत ज्यादा कॉफी चाय नहीं पीनी चाहिए. Take a walk, exercise a little. Basic problem solving techniques को समझिए, decision making को समझिए. You have to understand that problem will happen in life. हमारा शरीर ही एक प्रॉब्लम है. रोज सुबह सुबह मुझे बाथरूम जाना पड़ता है, फ्रेश होना पड़ता है, प्रॉब्लम नहीं है क्या? लेकिन इस प्रॉब्लम को हम लेकर बैठे रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? So you have to learn how to solve problems. Next is, my dear friends, monitor the number of hours you work and tell your boss and family how many hours you're working. Write weekly status report. क्या आपने गेन किया इस वीक में, क्या क्या अच्छी चीजें आपने की। और जब बहुत ज्यादा गुस्सा है तो बर्तन धोने चाहिए. Actually, I'm not joking. It's a fact. If you're too much under stress, go and wash dishes. Do a little bit of gardening. Play with your pets. Give time to yourself. Pamper yourself. You will be de-stressed in no time. Okay. Now, some more stress management techniques for you, my dear friends. Do not disturb का बोर्ड लगा दीजिए अपने बेडरूम के आगे, अपने ड्राइंग रूम के आगे, अपने दरवाजे पे लगा दो. अब आप वो समय नहीं रहा when people can always peep inside your life and disturb you. Do not disturb should be there even in your mobiles. Next is very important tip I'm giving, which I also follow very religiously. Everything does not need my attention right now. पहले मैं भी ऐसी थी, मुझे हमेशा से फील होता था ये सारा काम मैं आज ही कर लूं, आज ही पूरे स्कूल को बदल दूं, आज ही पूरा सिस्टम को बदल दूं. नो, it cannot happen. Everything in my life does not need attention right now. There are certain things which I can do now, certain things which I can do later on. No problem. ऐसे ही करो ना. Everything you don't have to do at the same time. Every minute you don't have to see the mobile. कोई मेल तो नहीं आया, कोई व्हाट्सएप तो नहीं आया. Check your mails only once a day, fixed time पे. आपको कोई मेल नहीं मिस होगा, आप चेक भी कर लोगे. दुनिया में मुझे नहीं लगता ऐसी कोई मेल सीबीएसई से भी आती होगी कि 24 आवर्स से भी कम टाइम मिला हमें करने के लिए. सो 24 आवर्स में एक बार मेल चेक करो, काम करो, काम खत्म करो. 24 आवर्स में एक बार फेसबुक देखिए, जितना लाइक, जितना हार्ट, जितना थम्स अप भेजना भेज दो प्लीज, बट एवरी मिनट डोंट कीप ऑन चेकिंग योर फेसबुक, योर मोबाइल्स. नेक्स्ट इज बी ऑर्गेनाइज्ड इन लाइफ. आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा सामान हमें कहाँ रखना है, लाइक प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस. Organized people have less stress. Next, in your entire day of 24 hours, apart from the sleeping time, you should have 10 minutes where you do nothing. So what do? I do nothing. So what do? I spend time with myself. I think, I meditate. I become a better person every day, every minute. And of course, you are teachers, you must be HODs, you must be principals, maybe you are headmasters, coordinators, whatever you are. You are a mother, you're maybe a father. You may be a homemaker also, of course. Apart from our job, we are homemakers as well. So please learn the technique of meeting management skills. आप 10 मिनट के लिए ही अपने मेट से मिल रहे हो, बात कर रहे हो, अपने हस्बैंड से बात कर रहे हो, दिन भर की सारी चीजें डिस्कस की, लेकिन कैसे हम मीट कर रहे हैं, कितनी बातें, कितनी चीजें हमें बतानी है,
हम अपने स्टाफ से मीट कर रहे हैं, हम अपने बच्चों से 10 ही मिनट का हमारा होमरूम पीरियड होता है जब हम अटेंडेंस लेते हैं, लेकिन उस 10 मिनट में मुझे क्या बोलना है, कैसे मैनेज करना है। जैसे बीइंग द प्रिंसिपल, मैं 15 मिनट के लिए रोज असेंबली में जाती हूँ, तो 15 मिनट मेरा इतना इतना वेल प्लान्ड होना चाहिए दैट इन दीज 15 मिनट्स आई गिव द रेस्ट 6 hours of planning to them. My mind should be out. What I have in my mind for the next 6 hours, that should come out in a 15-minute meeting. और 15 मिनट्स में भी प्रिंसिपल को कितने मिनट मिलते हैं बोलने के लिए? 2 मिनट, 3 मिनट। तो आपको 6 घंटे की बात 3 मिनट में समझानी है। सो लर्न मीटिंग ट्रिक्स, मीटिंग management skills, which will make your life very, very beautiful. Remember, your body gives you red flags. You all, I'm sure none of you are in your 15s or 16s or your teens. We all are good adults. Our body gives us red flags. What are those red flags? Insomnia, digestion problems, high blood pressure, our body muscle tiredness. Our body gives us these signals, and these signals are known as red flags. Call them red flags. Remember this. और जैसे ही आपको कोई रेड फ्लैग अगल बगल आपके नजर आए, आप कॉन्शियसली सचेत हो जाइए कि स्ट्रेस मेरे आसपास है, स्ट्रेस मेरे आसपास है। जैसे हमारे आसपास कोई मच्छर घूमता है तो हम क्या सोचते हैं, अरे कहीं डेंगू का मच्छर तो नहीं, मुझे काट लेगा, मुझे डेंगू तो नहीं हो जाएगा, अरे गुड नाइट चलाओ, अरे ये लगाओ, अरे वो लगाओ। वैसे ही आप अपने रेड फ्लैग्स पे नजर रखिए आज से फ्रेंड्स, अभी से। मेरा बीपी तो नहीं हाई हो रहा है, सर में दर्द तो नहीं हो रहा है, हेडेक तो नहीं हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, ऐसा तो नहीं हो रहा है, टेंशन तो नहीं हो रही है, रात में नींद आ रही है ना प्रॉपर्ली। अगर इसमें से कुछ भी है तो आप याद रखो, आपके बॉडी ने आपको रेड फ्लैग्स देने शुरू कर दिए हैं। यानी इट्स टाइम माय डियर टू से बाय बाय टू डिस्ट्रेस, बाय बाय टू डिस्ट्रेस, नॉट स्ट्रेस, बाय बाय टू डिस्ट्रेस। ओके, सो प्लीज रिमेंबर, it's all in our attitude. Our attitude actually decides what we are going to become in our life. हमारे inner potentials को हम कितना utilize करेंगे, कितना बाहर लाएंगे, everything depends upon attitude. Life is 10% of what happens to us and 90% of how we react. So now we change this word react with respond to it. If you, instead of reaction, if you respond, your life will be beautiful, even at the adverse times. और नहीं तो मैंने बहुत लोगों को, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में आती हैं और वो उसको इतना बड़ा बना देते हैं कि एज इफ उनकी लाइफ वहां खत्म हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं होता। सो योर एटीट्यूड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बी रियलिस्टिक। प्लीज, मैं 10 दिन भी बिना खाना खाए रहूंगी, बीमार हो जाऊंगी, वो ये हो सकता है, लेकिन मैं प्रियंका चोपड़ा जैसी नहीं होने वाली। ये आपको सोचना हो। आप टीचर्स हैं, यू हैव टू थिंक कि इस बच्चे को अगर मैं एक्सपेक्ट करती हूँ उसको 90 आउट ऑफ 100 आ जाए इस बार, तो नहीं पॉसिबल है। हाँ, ये 40 ला दे, वही मेरे लिए बहुत है कि पास हो गया। अगले साल 45 लाएगा, उसके अगले साल 50 लाएगा। You should have realistic goals for yourself and for your kids, for your family, for people around you. I'm the principal. I cannot expect my PA to become overnight transformation. नहीं possible है। मुझे एक एक चीज ही करके उसे एक एक बार में सिखानी है। सो बी रियलिस्टिक। आप अपने आप को भी प्लीज सुपरमैन, सुपर हीरो मत समझो। यू आर अ नॉर्मल 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 ह्यूमन बीइंग। सो बी रियलिस्टिक। अपने आप को टॉर्चर मत करिए, अपने अगल बगल के लोगों को टॉर्चर मत करिए। हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योरसेल्फ एंड फ्रॉम पीपल अराउंड यू। Get organized and take charge. I've already told you. Take breaks. Give yourself me time. You know, even when I'm working in my office, I start my work from 7 o'clock in the morning. I'm still working. But then, you know, when I'm tired, I just shut my screen, go take a round, do this, do that, talk to people, drink water, have a cup of coffee, whatever it is. You have to give break to yourself. And that is the reason, you know, हमारे स्कूल में भी होता है ना कि 2 मेजर पीरियड हो, उसके बाद PHE हो गया, म्यूजिक हो गया, लाइब्रेरी हो गया, डांस हो गया, कुछ पीरियड्स के बाद लंच ब्रेक होता है, फिर बच्चे पढ़ते हैं। सो दिस काइंड ऑफ ब्रेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज व्हाई द टाइम टेबल इज आल्सो सेट लाइक दिस कि बच्चों को भी स्ट्रेस नहीं हो। ओके, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। इफ यू आर हैप्पी, you make the world around you happy. If you are sad, the world around you is sad. Please remember this. You cannot make people happy if you are not happy. You have to be happy. अब आप कैसे हैप्पी होते हो आप जानो। मैं कैसे हैप्पी होती है मेरी बात है। मुझे खाने से हैप्पीनेस मिल रही है, रेस्ट से मिल रही है, या प्रॉपर रूटीन से मिल रही है, कि सफाई से मिल रही है, आई डोंट नो, बट आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। आई नीड टू बी हैप्पी, आई नीड टू बी वेल फेड, आई नीड टू टेक गुड रेस्ट, आई नीड टू फॉलो प्रॉपर रूटीन, आई नीड टू फॉलो प्रॉपर regime.
then only I can be happy. So take care of yourself, be happy to make the world around you happy. Okay, when you are happy, the world is happy. When you are sad, world is sad. And to be happy, it's very important to learn to say no. I cannot do it. I will not do it right now. अगर आप स्कूल से थक कर, जैसे अभी आपका सेशन 5 बजे खत्म होगा, अगर आप हो सकता है स्कूल में है या घर में हो, उसके बाद अगर आपके घर में कोई आपसे कहे चलो बिरयानी बनाओ आज, तो प्लीज इफ यू डोंट फील लाइक मेकिंग, से नो, आज बहुत टायर्ड थे, आज सेशन है, आज नहीं बना सकते, कल बना. There's no harm in it. Even बच्चों को भी सिखाइए to say, learn to say no. Otherwise, children fall into prey of such dirty things. If they don't know how to say no, तो हो सकता है उनके साथ बहुत कुछ गलत हो जाए. Okay, next is regularly exercise. Exercise में इसलिए नहीं कह रही कि आप दुबले हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे. When you exercise, what happens is there's a hormone which is released in your body. And that hormone makes you a happy person. So exercise to be happy, not only to be fit and slim. Exercise gives you happiness, and that happiness will make you stress free. That's very, very important. Get a hobby, do something different. अमूमन मेरे एज के में तो जब आप लोग पहुंचेंगे तो आपके कुछ हॉबी नहीं होता है. हम ऑफिस में काम करते हैं, फिर हम घर जाते हैं, टीवी देखते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं. लेकिन ऐसा नहीं होता है. अगर मेरे पास घर पे भी कुछ करने के लिए हो जो मुझे खुशी दे, जो मुझे एक हैप्पीनेस दे, जो मुझे अचीवमेंट का एहसास कराए, तो आई विल बी अ वेरी वेरी स्ट्रेस फ्री पर्सन. जैसे गाना सीखें. आप बच्चों को समझाइए स्कूल में, बेटा आपको गाना इसलिए नहीं सीखना है क्योंकि आपको सिंगर बनना है. आपको गाना इसलिए सीखना है, आपको म्यूजिक इसलिए सीखना है, आपको पेंटिंग इसलिए सीखना है. दैट कैन बिकम योर हॉबी. व्हेन यू वेरी टायर्ड, व्हेन यू आर अंडर स्ट्रेस, गो एंड पेंट समथिंग, गो एंड सिंग समथिंग, प्ले द गिटार, प्ले द ड्रम, यू विल बी रिलैक्स्ड. Probably हम इसीलिए स्कूल में इतने सारे सब्जेक्ट सिखाते हैं, because we know everybody cannot become a singer or a player or an accompanist whatsoever, but still if I know to sing a little, जैसे आप बाथरूम जाते हैं, आप गाना गाते हो, कितना अच्छा फील करते हो या नहीं? आपको पता है आप बहुत खराब गा रहे हो या बहुत अच्छा गा रहे हो, आपको ये भी नहीं पता होता कौन सुन रहा है, मुझे ये भी नहीं पता होता, but I sing. You also must be singing. Why do we do that? It's so natural, because it gives us happiness. So can you make it your hobby, which you can always do when you're a little free? That will give you happiness. And when you are happy, then whatever talents we have, inner potentials we have, that comes out in front of the world. Happiness is very, very important. And as I've already told you this, my dear, slow down, stop. दिन भर में 3-4 बार प्लीज स्टॉप करो. प्लीज अपने स्पीड को कम करो. रोड पे भी स्पीड ब्रेकर्स होते हैं ना, आपके लाइफ में भी स्पीड ब्रेकर्स होने चाहिए. यू डोंट नीड टू रन. किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं आप कितने अच्छे हैं. आप बहुत अच्छे हैं. यू डोंट नीड टू प्रूव एनीबॉडी दैट यू आर वेरी गुड. ओके, सो प्लीज स्टॉप एंड enjoy your life and laugh as much as you can. Relax, laugh, stop, relax as much as you can. और ये 2 चीजें मैं आपको बताती हूँ. डीप ब्रीदिंग इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज. जब भी आपको स्ट्रेस हो, गुस्सा आ जाए, एग्रेशन हो जाए, close your eyes and do deep breathing. You'll feel relaxed. And visualization. Close your eyes and visualize. जैसे मुझे मछली बहुत पसंद है, मैं अपनी पर्सनल बात कर रही हूँ, तो मैंने अपनी आंखें बंद की और मैं सोच रही हूँ मेरे चारों तरफ मछलियां हैं. ये वाली मछली, वो वाली मछली, वो वाली मछली. मैंने ये वाला डिश बनाया, मैंने वो वाला डिश बनाया, उसको मैंने चावल के साथ खाया. आई एम सो हैप्पी. मेरे चारों तरफ आइसक्रीम है, मेरे चारों तरफ नदियां हैं, मेरे चारों तरफ पहाड़ है. वट एवर यू वॉन्ट टू सी. मैं वेकेशन पर नहीं जा सकती, बहुत टफ है मेरे लिए जाना, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा जॉब नहीं अलाउ कर रहा है. कोई बात नहीं, आंखें बंद करो और सोचो इस वक्त मैं पूरी में हूँ, सी बीच में हूँ, ऐसे घूम रही हूँ. रिलैक्स्ड, immediate, this will give you immediate relaxation and you will be stress free. That's a wonderful way. Okay, so please understand these things. It's just a repetition. Take breaks, have a to-do list, break down your work, and enjoy your life as much as you can. So an awakened person is someone who finds freedom in good fortune and bad. The last word is very important. Please be enlightened. Please be awakened. Understand that if good has come to my life, bad will also come. If bad has happened, something bad has happened, something good will also happen. And if both are good, in both the situations, I'm free from stress. So be an awakened person in life. That's very, very important. If you have any questions, please put it up in the chat box and I'll take up your questions. But before that, thank you so much for this session, for giving me your time. Thank you once again, Anirudh Sahodaya. And now it's question time from your side, please.
Any questions if you have in the chat box. I hope you enjoyed the session, and I hope at least 2-3 takeaways you will have from the session, which will help you relieve your stress. Questions, please. Questions. Anyone has any questions? Thank you. Thank you so much. Okay, so the participants can write the question in the chat box. So thank you so much, ma'am. Thank you for the amazing session once again. Thank you, sir. Thank you so much. My son has autism. How can I? There's a question. Yes. How can I? Just a minute. My son has autism. How can I help